Sakshi Bhujbal. Welcome to my AWS series, and this is the very first video in my AWS Cloud series. So इस सीरीज में हम AWS के बेसिक टू एडवांस every series cover करने वाले हैं. In this series, we are going to learn the practicals as well as the interview questions. What questions will be asked in our interview? Everything will be prepared in this AWS series. So before we dive into AWS services, we first need to understand what cloud computing actually is. So let's move. So the cloud computing is nothing but the delivering of computing services. तो कौन सी computing services deliver होती है? Just like servers, storage, databases, networkings over the internet. So a services over the internet जो deliver करता है उसे बोलते हैं cloud computing. So instead of keeping everything on your local computer or private servers, we use the cloud computing. So instead of buying your own computer or server, you rent it from the cloud providers. So cloud providers क्या होते हैं? So cloud AWS, Microsoft Azure, GCP ये होते हैं cloud providers जो हमें ये services provide करते हैं. And for that we have to only pay for what you use. So just think of it like instead of buying a powerful computer or server, हमें कोई कंप्यूटर और सर्वर बाय करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट हम इसे रेंट पर ले सकते हैं. यू जस्ट रेंट इट फ्रॉम कंपनीज लाइक दैट आई हैव एक्सप्लेन. सो एंड क्लाउड ओनली पे फॉर व्हाट यू यूज़. सो हमें जितना भी हम यूज़ करते हैं जस्ट वी हैव टू पे फॉर दैट. सो इन द रियल लाइफ एग्जाम्पल, सपोज you want to build an online shopping website. Okay, so without cloud you will have to buy servers, set up data centers, then hire people to maintain them. So this is very costly. But with cloud you simply log in into AWS to launch servers such as EC2, upload files to cloud in S3 and connect it using a database like RDS. So you just have to pay only for these resources, not rather than using the physical servers. You just use the resources and pay for only for them. Okay, so just like an electricity at home, you don't build a power station in your home. You just use electricity from the grid and pay the bill monthly. Whatever you use, you have to pay only for that. Then move to the characteristics of cloud computing. Now let's see some special characteristics that make cloud computing different from traditional IT. So first characteristics is on-demand self-service. What does it mean? Suppose you need a new server. मतलब अगर तुम्हें कोई new server start करना है at 2 AM, but on AWS you can create it instantly yourself. So AWS में हम उसे instantly create कर सकते हैं without calling anyone. That is the on-demand self-service. तो अब second characteristics क्या कहता है इसका? तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस. तो ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस क्या होता है? तो ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस इज नथिंग बट यू कैन एक्सेस क्लाउड सर्विसेज फ्रॉम लैपटॉप. हम क्लाउड सर्विसेज कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, हमारे लैपटॉप पे, मोबाइल पे और टैबलेट पे. फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब वीडियोज यू कैन रन इट ऑन गूगल क्लाउड एंड यू कैन वॉच देम फ्रॉम एनी डिवाइस एनीवेयर. हम उसे अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं, अपने लैपटॉप पे देख सकते हैं. सो इट इज़ अ ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस. So cloud computing provides us a broad network access. So third one is the resource pooling. तो resource pooling क्या होता है? जो cloud providers pool resources and share them among many customers securely. So it is like how Ola cabs serve multiple passengers with the same fleet, just like the same, but each ride is private. So similarly, your data stays safe even though resources are shared. Then fourth one is the rapid elasticity. So elasticity is nothing but the cloud can scale instantly. Like during IPL, to live streaming, Hotstar automatically increase capacity when lack of user join. जो IPL में ज़्यादातर लोग क्रिकेट देखते हैं, उस टाइम जो हॉटस्टार होता है वो ऑटोमेटिकली कैपेसिटी इंक्रीज देता है. एंड रिड्यूसेस इट व्हेन मैच एंड्स. और जब मैच नहीं होते हैं, जो IPL ख़त्म होता है, देन इट रिड्यूसेस इट्स कैपेसिटी. So the last one is the pay as you go model. It as I have earlier mentioned, it is only you have to pay for what you use, like water bill or electricity bill. So these are the characteristics
of cloud computing. You can see. So let's move to the benefits of cloud computing. So what are the benefits of cloud computing? Cloud computing have the key benefits such as cost effective. Earlier companies had to buy expensive servers. As I have told that before cloud जो कंपनीज होते थे उन्हें एक्सपेंसिव सर्वर्स बाय करना पड़ता था और फिर उन्हें सेटअप और डेटा सेंटर सेटअप करना पड़ता था. बट अभी क्लाउड आने के बाद उन्हें डेटा सेंटर सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है और सर्वर्स बाय करने की ज़रूरत नहीं है. So for example, a startup can just rent servers on AWS for a few dollars instead of investing lack of infrastructure. So second one is the scalability. तो सेकेंड बेनिफिट होता है स्केलेबिलिटी. लाइक अगर जो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप होती है ना लाइक फ्लिपकार्ट और अमेजोन और दिवाली की सेल्स में जो होती है ना उनकी दिवाली की सेल्स में मिलियंस ऑफ पीपल शॉप ऑनलाइन. ओके, but with cloud they can instantly add more servers to handle traffic and reduce them once the sale is over. That's the scalability. Third one is the accessibility. With cloud you can access your applications from anywhere. Okay, from laptop or from mobile, etc. For example, if you upload your project on Google Drive, you can open it from your laptop as well as you can open it from your phone or even at your friend's house anywhere with internet. Then third is the speed and agility, in which launching a new server and AWS take just a few minutes. और जब हम AWS में न्यू सर्वर लॉन्च करते हैं विद इन अ सेकेंड वो लॉन्च होता है. लाइक इमेजिन इफ यू हैड टू बाय अ फिजिकल सर्वर इट वुड टेक वीक्स. ओके, सो यूजिंग AWS वी कैन लॉन्च इट इन विद इन अ सेकेंड. देन थर्ड इज हाई अवेलेबिलिटी. इट कैन जो AWS की सर्विसेज होते हैं वो 24/7 अक्रॉस मल्टीपल डेटा सेंटर्स अवेलेबल होते हैं. यू कैन स्ट्रीम नेटफ्लिक्स एनी टाइम जस्ट लाइक दैट डे और नाइट बिकॉज इट रन्स ऑन क्लाउड विथ हाई अवेलेबिलिटी. Then last one is the security, in which AWS, Azure or GCP all uses encryptions, firewalls and IAM, that is identity management. For example, when you log in into your bank account, so cloud ensures that your transactions are safe and no one can read your data. So automatic updates. When you use Gmail, you don't worry about updates. Google updates it in the background. Similarly, cloud providers automatically update software and servers without disturbing. So these are the some key benefits of cloud computing. Then why we have to choose them. So let's move to पे automatically होता है. So second one is web hosting. So web hosting में क्या यूज़ है cloud computing का? So cloud servers provide scalable and cost efficient hosting for websites and applications with high uptime. So let's understand it through example. Like जो नेटफ्लिक्स जो है जो AWS की सर्विस यूज़ करता है फॉर वॉट टू होस्ट एंड स्ट्रीम कंटेंट टू मिलियंस ऑफ यूजर्स वर्ल्ड वाइड विथ हाई अवेलेबिलिटी. मतलब हम कभी भी नेटफ्लिक्स पे एट एनी टाइम यू कैन सर्च द मूवीज और सी इट. ओके, सो नेटफ्लिक्स यूजेस AWS सर्विसेज टू होस्ट एंड स्ट्रीम द कंटेंट्स. सो थर्ड यूज है उसका, थर्ड एप्लीकेशन है बिग डेटा एनालिटिक्स. सो बिग डेटा एनालिटिक्स में कैसे यूज होता है? सो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हेल्प बिजनेसेस प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा फॉर इनसाइट्स, ट्रेंड एंड प्रिडिक्शन. तो कैसे बिग डेटा एनालिटिक्स में वो काम करता है? लाइक जो स्पॉटिफाई है वो GCP का सर्विसेज यूज करता है. फॉर वॉट? इट इज़ यूज टू एनालाइज लिसनिंग पैटर्न्स ऑफ मिलियंस ऑफ यूजर्स एंड प्रोवाइड पर्सनलाइज सॉन्ग रिकमेंडेशन. जो हम स्पॉटिफाई पे जो सॉन्ग्स लाइक करते हैं, जो हमारी फेवरेट लिस्ट बनाकर रखते हैं, जो लाइकिंग्स है बेस्ड ऑन आवर लाइकिंग्स इट शोज द रिकमेंडेशन ऑफ सॉन्ग्स. ओके, सो देन फोर्थ वन जो है उसका यूज़ AI एंड मशीन लर्निंग. सो AI एंड मशीन लर्निंग तो क्लाउड प्रोवाइडर्स लाइक GPU, TPU बेस्ड प्लेटफॉर्म्स टू ट्रेन एंड डिप्लॉय मशीन लर्निंग मॉडल्स विदाउट रिक्वायरिंग एक्सपेंसिव हार्डवेयर. सो एक्सपेंसिव हार्डवेयर खरीदने की So fourth application is AI and machine learning. So cloud provides GPU or TPU based platforms to train and deploy machine learning models without requiring expensive hardware. So जो Google Cloud AI and Azure machine learning allows developers to build AI solution. और जो टेस्ला है वो भी
क्लाउड बेस्ड AI ट्रेनिंग मॉडल्स यूज़ करती है फॉर ऑटोनॉमस ड्राइविंग सिस्टम के लिए. So, and last one is the collaboration tools. So cloud enables teams to work together in real time system, और वहाँ पे हम फाइल शेयर्स भी कर सकते हैं और कम्युनिकेट भी कर सकते हैं यूजिंग क्लाउड. फॉर एग्जांपल जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है और जो गूगल वर्कस्पेस है, वहाँ पे हम डॉक्स, शीट और मीटिंग भी अलाउ कर सकते हैं फॉर स्टूडेंट, कंपनीज एंड रिमोट वर्कर्स, एंड वी कैन कोलैबोरेट इट फ्रॉम एनीवेयर. सो जो कोविड का जो सीज़न था, पैंडेमिक सीज़न, उस टाइम में भी हम ऐसे टूल्स यूज़ करते थे लाइक जूम मीटिंग एक्सेट्रा. So these tools become essential for online classes and work from home. So these are the applications for cloud computing. सो थैंक यू ऑल. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपकमिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए. और जो AWS की सीरीज़ है उसका नेक्स्ट वीडियो हम AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे लेने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.